Okay, good morning to all of you. Am I audible? Yes, ma'am. Okay, so I think we have completed the practical number 2 in the last lab. Practical 2 हो गया था? Ma'am, we were doing the commands, ma'am. In the packet tracer or in the CMD? Packet tracer, ma'am. So CMD में networking commands बाकी है? Yes, ma'am. Okay. Okay, so we'll do that today. Ma'am, there was a doubt, ma'am. Can you please share the format of the practical, how we have to submit, because we have to complete it as soon as possible. Okay. Okay. I'll share that format in the e-content by today itself. Yes, ma'am. Thank you. Okay. So starting with the second practical, let me share my screen. Okay, so as we have discussed in the first lab itself, that whatever the practicals that we are doing in the lab, you need to do uh, all the practicals, right? You have to perform with me, or you can uh, after the completion of this lab, you need to implement at your end, right? So as of now, we have completed the first practical, that is about the Cisco packet tracer. So I think हमारे सिर्फ एक ही लैब हुई है अभी तक. मैम एक्चुअली 3 लैब हुई है, लेकिन उसमें एक में हमने प्रैक्टिकल किया था, दूसरी लैब मर्ज हुई थी, और Okay. तीसरे में शायद आप एब्सेंट थे, ऐसा कुछ था. Okay. So we have means this is our second lab, right? जिसमें जो second practical कर रहा है वो. यस मैम. Okay. That's why हम थोड़ा पीछे है बाकी lab batches से. Okay, so the second practical is about the networking commands. Let me just paste the definition here. So this was the first practical that we have already completed. Second practical is about demonstrate basic networking commands. So today we will perform the second practical, right? So for that, you need to open the CMD, right? So let me share my screen here, and you have to do along with me, right? ये practical है वो आप मेरे साथ parallelly कर सकते हो. So ये आपको साथ में ही करना है. So for that, you need to open the CMD and run as administrator.
So open cmd command prompt. I think my screen is visible to all. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So as and when you complete, just write in the chat box done. At every step, you need to acknowledge me so that I can move forward. Okay. So now you have opened the command prompt. So today we will perform the basic networking commands in the command prompt, right? So the first command that we'll implement here is ping command. So the ping command is used for what? So first of all, let me just explain that. So generally we can say the ping command is used to determine the TCP IP network, right? TCP IP network, or we can say the IP address, whatever the issues that is related with the IP address, that will be, we can say, can be done by using the ping command. So basically we can say that by using this command, it will show you some data. So let's just write ping, and let's say that suppose if I am writing any domain name that is www.google.com. So you can see here, here I'm getting the reply from the server, right? As you can see this line, that is reply from 142.250.77.68. अब ये जो IP एड्रेस है वो चेंज मीन्स सबका सेम नहीं रहेगा, राइट? क्योंकि जो कोई भी डोमेन नेम का हम IP एड्रेस सर्च करते हैं, सो any website will not reveal its actual IP address, right? कोई भी वेबसाइट है, गूगल कोई भी सर्वर है, अपना एक्चुअल आईपी एड्रेस है वो कभी रिवील नहीं करेगा. गूगल है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, फेसबुक है, राइट? कोई भी अपना एक्चुअल आईपी एड्रेस रिवील नहीं करेगा. सो आपको जो भी यहाँ पे आईपी एड्रेस मिलेगा, दैट विल बी डिफरेंट, दैट विल नॉट बी दी सेम हियर, right? So this you can see, if you are getting this reply from, if you are seeing this, we can say the statement in your command from, that means your internet is working. This reply from, if you are seeing this, we can say the statement in your command from, that means your internet is working properly, राइट? आपका जो टीसीपी आईपी नेटवर्क है वो अच्छे से चल रहा है. दैट मीन्स यू कैन गेट, यू आर गेटिंग द रिप्लाई फ्रॉम द सर्वर एंड यू आर गेटिंग द आईपी एड्रेसेस एज वेल, right? So there is no issue regarding the IP addresses, and with the, we can say there is no network issue also. So your TCP IP protocol is working well in your system. So try it at your end. Ma'am. Yes. Actually, I am getting a large number of large number in the IP address. It might be an IPv6 address. That's why it happens. Yes, ma'am. I know that, but it's not showing the TTL. TTL, that is the time to leave, right? In some system, there are certain information that to be displayed, और कुछ system में सारे information नहीं दिखाता है. Let's say कि TTL है, वो कुछ system में दिखा रहा है, कुछ system में नहीं दिखा रहा है, right? So it happens. The main thing is there should be a reply from the server that you are getting. Yes, ma'am. Okay, then it's good. Okay, now the next command is tracert. Tracert, that means tracert command क्या करता है? It trace the route. So whatever the information that you, whatever the data that you will get here, that will trace the whole route what you are searching for. Let's say that tracert google.com. So you can see here tracing route to google.com, और यहाँ पे IP एड्रेस भी दिया गया है. So it's not like कि ये जो IP एड्रेस है वो Google सर्वर का ही IP एड्रेस है. That will be a random IP address, right? Now let's say that if I am requesting for any website, I am requesting for any, yes, should we need to take a screenshot of each step? Yes, you need to take a screenshot at every step and you need to save it, right?
सो आपको दूसरी बार इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ेगा. Okay, so one thing we can say the tracet command is used for to trace the route from the client to the server. Right now, let's say that here I am a client here, right, and I am requesting for any website, right, or any URL, or we can say any domain. So I'll just write tracet and the domain name. I have written the google.com, but you can use any domain, राइट. आप अमेजोन कर लो, amazon.com या फिर flipkart.com या फिर facebook.com, कोई भी डोमेन आप सर्च कर सकते हो, राइट. सो इट विल ट्रेस द रूट फ्रॉम अ सोर्स पॉइंट टू द डेस्टिनेशन पॉइंट, राइट. अब यहाँ पे इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपको जो होप दिख रहा है वो 30 होप दिख रहा है. So if you are searching for Amazon, if you are searching for Facebook, you will got the approximate hope count. यहाँ पे आपको exact hope count नहीं मिलेंगे. The hope count which is mentioned over here, that is a approximate hope count. Now you will have a question that madam, what is the hope here? Hope का मतलब क्या है यहाँ पे? That if I am sending a request from a source point, that request will be traveled through many substations, right. बहुत सारे substations होंगे, उसके उससे पास होके वो request जाएगी, right. So the packet will be traveled from one hope to the another hope to the third hope, fourth hope, fifth hope, right. So the packet will be traveled, the request will be traveled from one hope to the another hope, and then it will reach to the destination point. Now some of you might will get the star, and then it will show like request timeout, right. ऐसा किसी को मिल रहा होगा, किसी को ऐसा मिल रहा है स्टार होके फिर रिक्वेस्ट टाइम आउट, ऐसा कोई आउटपुट मिल रहा है आपको? इफ यू आर गेटिंग सच आउटपुट, Yes, लेट ma'am. मी नो. हाँ, सो उसका मतलब क्या है कि कई बार कैसा होता है कि हमारा डेटा पैकेट है वो नियरेस्ट होप को ट्रेस नहीं कर पाता है, right. So at that time it will give the output like request timeout or unable to find the hope, or it will show like star star, ऐसा भी दिख रहा होगा किसी को, स्टार स्टार, एंड देन इट विल बी लाइक रिक्वेस्ट टाइम आउट. इसका मतलब क्या है कि जो डेटा पैकेट है उसका वो अपना नियरेस्ट होप फाइंड नहीं कर पा रहा है, राइट. जैसे ही वो नियरेस्ट होप फाइंड कर लेता है, जैसे ही वो नियरेस्ट होप को ट्रेस कर लेता है, इट विल स्विच टू दैट होप एंड देन इट विल रीच टू द डेस्टिनेशन पॉइंट, राइट. सो ट्राई इट एट योर एंड. Okay, good. So if you can see here, I have tried one another domain और वो ट्रेस कर रहा है, पूरे रूट को वो ट्रेस कर रहा है. So you can see here I am getting that outcome that I have already discussed, right. जब वो होप नियरेस्ट होप को वो फाइंड नहीं कर पाता है, जब वो ट्रेस नहीं कर पाता है टू रीच एट द डेस्टिनेशन पॉइंट, इट विल शो लाइक दिस वे, स्टार 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 रिक्वेस्ट टाइम आउट, स्टार 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 रिक्वेस्ट टाइम आउट. अगेन as and when it finds its nearest hope, it will switch to that hope and then it will reach to the destination. आप दूसरा डोमेन भी ट्राई कर सकते हो यूजिंग द सेम कमांड. Ma'am, यस. ma'am, for me it's showing 184 millisecond and then general failure. कैन यू शेयर योर स्क्रीन? Yes, ma'am.
Visible, ma'am? Yes, it's visible. www.amazon.com. Then what it shows? Tracing Ma'am, route to. yes, ma'am. And after that, general failure. Okay, general failure. Try it again using the same. You are writing the correct spelling, right? Now Yes, it ma'am. works. See, sometimes this kind of error occurs. Okay, ma'am. Ma'am, Hmm. but like, why is it so? I mean, why you Sometimes are it saying happens that is it is unable to dispatch their packet from the source point. It fails to dispatch the packet, right? So at that time it shows sometimes this kind of errors. okay, ma'am. Okay, stop sharing your screen. Ma'am, why in my system it is showing IPv6 address? In some system it is configured the like कि IPv6 एड्रेस शो करता है, राइट? सो सभी सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशंस अलग रहते हैं. मेरे सिस्टम में सारे जो आईपी एड्रेस दिख रहा है वो IPv4 एड्रेस दिख रहा है, राइट? सो इट हैपेंस. सबके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अलग रहता है, सो इट डिपेंड्स. If you want to change the configuration, then उसके कॉन्फ़िगरेशंस चेंज करने हैं तो बहुत सारे कमांड्स देखने पड़ेंगे. आई हैव टू गो थ्रू द नेटवर्क सेटिंग्स एंड ऑल. वो सब देखना पड़ेगा मुझे. How it can be changed. okay. Okay. Now the next command, that is an ipconfig command, right? ये किसी ने शायद सुना भी होगा कि ipconfig command किस लिए यूज होता है. Let me share my screen. So ipconfig, we can say it's a console command, right? Which can be issued to the command line interpreter to display the network settings currently assigned to any, or we can say the network adapters in the machine, right? Now, when you just type the ipconfig command, it will show the different network settings. So if I'm writing ipconfig and then I'm click on the enter button, I'll see all the information, all the data, or we can say all the information related to the network. Right now, I am connected with the university Wi-Fi. I am using the university network. Right, so it will show me the status like this. राइट यहाँ पे आप देख सकते हो इथरनेट. यहाँ पे मैं जो यूज कर रही हूँ दैट इज अ वायरलेस लैन एडेप्टर वाईफाई. राइट, यहाँ पे जो मैंने यूज किया है. सो यहाँ पे MEFGI नहीं दिख रहा है, अदरवाइज इट विल शो द स्टेटस MEFGI. यहाँ पे उसका सर्वर का नेम दिखाता है MEFGI.com. दैट मीन्स आई एम कनेक्टेड विथ अ यूनिवर्सिटी Wi-Fi and I'm using the LAN cable for the internet. So it will show the status MEFGI.com. Right? So just try this command. It will show the different network settings. And suppose if I'm writing like ipconfig/all, right? And click on the enter, it will show like this. It will give the information related to the physical address, DHCP protocol. Yet you are not aware about the DHCP protocol. That is a dynamic host configuration protocol that will discuss in the हमारे practical list में already एक DHCP का पूरा practical है. We have one whole practical which is on the DHCP protocol. So as and when it comes, we'll discuss what is DHCP protocol. Right, so when you just write command ipconfig/all, it will display all the information related to that. You can see here the host name is displayed, then physical address, that is the MAC address of your PC, will be displayed. Right, and if you are using any connection, networking connection, suppose if you are using the Wi-Fi, so it will give the information through which network you are connected and what is the IP address of that.
right? So that all networking information will be displayed by using an ipconfig command. So for that ipconfig के लिए आप दो variants use कर सकते हो. You can write the ipconfig जिसमें पूरी डिटेल्स डिस्प्ले नहीं होती है, सम ऑफ द डिटेल्स विल बी डिस्प्लेड टू यू, राइट? जैसे कि फिजिकल एड्रेस है, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, दैट विल नॉट बी डिस्प्लेड in the ip config if you are just writing the ip config. But if you are writing ip config slash all, then you will see all the minor details of the networks, right? अभी यहाँ पे if you can see here IPv4 address भी दिया गया है, subnet mask भी दिया गया है, default gateway is nothing but we can say when any source is sending a packet to the destination point, at that time the gateway is used to transmit, to traverse that packet from one hop to the another hop, right? There will be a kind of a gateway through which the packet will be dispatched from, right? So that is the address of the default gateway that is mentioned over here, right? DNS servers यानी कि डोमेन नेम सर्विस और डोमेन नेम सर्वर, किसी भी नाम से जाना जा सकता है DNS. So DNS servers, that whatever the we are searching for, that which DNS server is used to trace that packet from a source point to the destination point, that address is mentioned over here, राइट? अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसके आपको डिटेल में आपको उसके बारे में नहीं पता है, बिकॉज यू हैव नॉट गोन थ्रू ऑल द थियरी लेक्चर्स. बट जैसे हम लोग थियरी सेशंस में ये सारे टॉपिक कवर करेंगे, जैसे कि आईपी एड्रेस है, तो आईपी एड्रेस है वो बहुत ही that's very broad topic, right? Agar IP address, it's a 32-bit address, right? If I see about more about the IP address, then it is basically divided into a 4 class. उसके 4 class है, class A, class B, class C, D and E, right? And all these classes are used for a different purpose, and for all these classes the IP addresses have the different range. If the IP address belongs to this range, then it comes under the class A. If it belongs to this, then it goes to class B, class C. So all these classes have a different ranges, right? So जैसे हम वो IP address का topic पढ़ेंगे, you will get an idea that this IP address contains total 5 classes, and all these 5 classes are used for the different purposes, right? So अभी तो सिर्फ हम लोग यहाँ पे कमांड टाइप करके देख रहे हैं कि अगर ये कमांड हमने टाइप किया, इफ यू आर राइटिंग दिस कमांड ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग टू आवर सिस्टम, राइट? अभी सिर्फ आपको यही देखना है और सिर्फ ये याद रखना है, ये जो सारी टर्मिनोलॉजी है जैसे कि फिजिकल एड्रेस, DHCP, डिफॉल्ट गेटवे, सबनेट मास्क, राइट, DNS सर्वर्स, राइट, ये सब टर्मिनोलॉजी सिर्फ आपको याद रखनी है कि ये चीजें हम ये कमांड से देख सकते हैं, राइट? This all these things will discuss in detail as and when we move to the theory session. So run this command at your end and let me know the status. Okay, so take a screenshot of that also. Okay, now if you want to know the host name of your system, then just write host name and
click on enter button, you will see the host name of your system. Okay, now moving to the next command, that is nslookup. So nslookup जो है वो किसके लिए होता है? It displays the information that you can use to diagnose the DNS, that is a domain name system or a domain name server. But उस ये command के पहले you should know what is DNS. But अभी ये जो हम command है वो सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हमको पता चले कि ये कमांड से कौन सी इंफॉर्मेशन है वो डिस्प्ले होती है, राइट? सो इफ आई एम राइटिंग nslookup for any domain name, let's say that I am writing a domain name facebook.com. so यहां से क्या होगा कि कौन से सर्वर से मेरी रिक्वेस्ट जा रही है? फ्रॉम दी server.mefgi.com, राइट? और उसके मीन्स ये जो सर्वर से जो मैं कनेक्टेड हूँ, यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हूँ. सो इट विल गिव दी आईपी एड्रेस की सेंडर का आईपी एड्रेस क्या है? दैट इज आई एम दी सेंडर, आई एम दी क्लाइंट हियर, राइट? सो दैट इंफॉर्मेशन विल बी डिस्प्लेड ओवर हियर. एंड कहाँ तक जा रही है? दैट इज अ डेस्टिनेशन पॉइंट, दैट इज आई हैव सर्च्ड फॉर द facebook.com and that address will be displayed, but this address will not be the actual IP address of the server, right? जो सर्वर का actual IP address है वो कभी यहाँ पे रिवील नहीं होगा, right? So with the help of the nslookup you will get to know the information related to the domain name server. ये दोनों domain name है, जो दोनों domain है उसकी information यहाँ पे reflect होगी. So try this command at your end. Okay, next is root. So when you just write the root command, it will show some route through which the packet is traversing from, right? अब जो root command है वो means हम ऐसा बोल सकते हैं that it allows you to insert the IP address manually in the routing table, right? यानी कि कोई भी root को आप delete भी कर सकते हो और उसको आप insert भी कर सकते हो in the routing table, right? If you can see this, that if there is some root like 157.0.0, right? So अगर ये root को आप delete करना है तो वो manually भी कर सकते हो, but there are certain sub commands that you need to use for that, right? So यहाँ से root में से आपको सिर्फ जो पैकेट जिस रूट से ट्रैवर्स कर रहा है, दैट गिव यू द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट स्पेसिफिक रूट. नेक्स्ट कमांड इज netstate कमांड. सो netstate कमांड किस लिए यूज होता है? इट शोज दी नेटवर्क स्टेटिस्टिक्स. नेटवर्क स्टेटिस्टिक मतलब कि आपका जो सिस्टम है वो कौन सा कनेक्शन यूज कर रहा है. सो ऑब्वियसली इट यूजेस अ टीसीपी कनेक्शन. वो कौन से पोर्ट के ऊपर रन कर रहा है. पोर्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास कि पोर्ट नंबर किसके लिए यूज होता है. सपोज लेट्स से दैट इफ द वन होस्ट, इफ देयर इज सम प्रोसेस गोइंग ऑन, सो इट यूजेस सम पोर्ट नंबर, राइट? जो पोर्ट नंबर होते हैं वो किसी प्रोसेस में असाइन किए जाते हैं. लेट्स से दैट इफ इन द सिस्टम इफ आई एम यूजिंग द ब्राउजर and I'm searching for any website, so I'll use the HTTP protocol, which is a default protocol in the browser, right? And it uses the port number 80. HTTP protocol है वो port number 80 use करता है. If let's say if I am using the FTP protocol for transferring the file from one host to the another host, then FTP uses the port number 21, राइट? सो अभी ये netstate कमांड से हमको कौन सा डेटा रिफ्लेक्ट होगा? लेट्स सी. netstate then slash hyphen means space hyphen a, and you can see here
which protocol my system is using, what kind of IP address is using by this, right? कौन सा listening port है, कौन सा protocol use किया जा रहा है, IPv4 statistics भी दिखाएंगे, right? So all types of address listening ports will be displayed over here by using this command, right? अभी net state के बहुत सारे variants है, you can use the different variants, that is net state space slash sorry hyphen n net state space hyphen r, which shows the data related to the routing table, right? Now let me just go with the different variant of the net state. If I am just writing net state space hyphen n, तो यू विल सी ऑल दिस थिंग इन दिस, राइट? यहाँ पे एन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मुझे होस्ट के नेम कई बार दिख रहे थे फॉरेन एड्रेस में, राइट? यहाँ पे जो होस्ट नेम दिख रहा था, इंस्टीड ऑफ दैट इट यूजेस इन द न्यूमेरिकल फॉर्म, वो न्यूमेरिकल फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, राइट? So you can see here the same thing will be displayed, but all the things will be displayed in the numerical form, right? There is one another variant of the net state command, that is net state space hyphen, and if I am going for help, it will show all the variants of the net state command. So you have to write net state space hyphen help and click on the enter. So you can see here, these are the different variants of the net state that you can try at your end, right? इसमें से हमने कौन से ट्राई किए? net state space hyphen a, which shows all the connections and the listening ports. दूसरा जो हमने ट्राई किया, that is net state hyphen n. So hyphen n क्या दिखाता है? Let's see. ओके यहाँ पे यस, डिस्प्लेज एड्रेसेस एंड पोर्ट नंबर्स इन द न्यूमेरिकल फॉर्म, एज आई हैव सेड कि हाइफन एन से क्या दिखाएगा, वो सारी इंफॉर्मेशन दिखाए, बट वो सारी इंफॉर्मेशन किसके फॉर्म में होगी? न्यूमेरिकल फॉर्म में, right? So we have used the two variants of the net state hyphen a, which shows all the connections and the listening ports, net state space hyphen n, which shows all the information, all the addresses and the port numbers in the numerical form, right? So you can use the different variants of the net state command, right? आप अपनी एंड से दूसरे वेरिएंट्स ट्राई कर सकते हो, बट ये नेट स्टेट स्पेस हाइफन हेल्प लिखोगे, यू विल सी ऑल दी वेरिएंट्स. डोंट फॉरगेट टू टेक द स्क्रीनशॉट, आई एम वेटिंग फॉर यू, टेक योर टाइम. जल्दबाजी में स्क्रीनशॉट लेना मत भूल जाना, अदरवाइज यू हैव टू परफॉर्म ऑल द कमांड्स अगेन. Which command? Root, ROUTE, you are talking about that, Aditya? Okay, so you can see here. Yes.
So you just have to type ROUTE. You can see here on the screen. रूट के बाद हमने दूसरा कमांड जो यूज किया है, दैट इज netstate command, in which we have used the netstate space -a. As and when you complete all the commands with this screenshot, let me know in the chat box. Okay, Mohammed Smriti, what Yes, about ma'am. you? Have you done? Done, ma'am, done. Okay. Smith Kumar, Manav, Devansh, Jaideep, let me know your status. Vidhi. Okay, good. Okay, so all of you are on the same page. Okay, now let's try the another command, that is ARP. So we have already discussed in the theory session ARP kya hai? What is ARP? Ma'am, address resolution protocol. Yes, very good. It is a address resolution protocol which is used to determine the physical address associated with a particular IP address. किसके लिए use होता है? It is generally used to find the physical address of any device which is associated with a particular IP address, right? So यहाँ पे जो ARP table हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, but there is one ARP table which shows the mapping between the IP addresses and the physical addresses, right? So we'll use the command ARP, that is about, let me just type this command. ARP space -a. So you can see here the IP addresses and the physical addresses which is associated with them. Right? So you can use the ARP command, that is address resolution protocol, which is used to find the physical address, or we can say the MAC address which is associated with the particular IP addresses. Right? So these are the different networking commands that you can perform at your end. Right? We have performed many commands. आप Ma'am, नेट स्टेट के yes. ma'am, in mine it is showing two interfaces of different IP addresses. Show your screen. Yes, ma'am. Ma'am, is it visible? Yes, it's visible. Okay, it shows here two interfaces. Yes, Okay, why ma'am. is it so? और Ma'am, एक बार same try in करो. my device. Sorry. Same in my device. Even I have हाँ. two interfaces. Okay. फिर से एक बार try करो स्मृति. Yes, ma'am. Again, ma'am.
Okay, why I have to look at this? Two interfaces क्यों दिख रहा है? ओके, आई लुक एट दिस कि टू इंटरफेसेस तो नहीं होने चाहिए, जनरली एक ही दिखता है जैसे मेरे सिस्टम में आपने देखा, बट आई चेक दिस प्रॉब्लम दैट व्हाई इट हैपेंस विथ यू. ठीक है, एंड आई Okay, लेट यू ma'am. नो. Yes, ma'am. Okay, so I think you all have taken the screenshot, whatever the commands that we have performed today, right? So you have to write 2 or 3 lines of all these commands that we have implemented today, right? आप सबको ये सारी means जो कमांड्स हमने इम्प्लीमेंट किए हैं उसके बारे में आपको दो तीन लाइंस थोड़ा ब्रीफ में लिखना है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग दी लैब मैनुअल, राइट? लैब मैनुअल प्रिपेयर करते हो तब आपको सारे कमांड्स के बारे में दो तीन लाइन लिखनी है और उसके बाद उसका जो स्क्रीनशॉट है वो पेस्ट करना है. लेट मी जस्ट शो यू, वन ऑफ योर क्लासमेट हैज ऑलरेडी shared that file with me, so in that way you can do. So if you see here, you can see ये एक आपके क्लासमेट ने ही मेरे साथ शेयर किया है. सो द डिफरेंट कमांड्स दैट वी हैव यूज्ड, यू नीड टू राइट the name of that command, and then after taking a screenshot you need to write 2 line and paste that screenshot in particular command that you have written, राइट? सो जो स्क्रीनशॉट के साथ साथ उस जो आपने कमांड स्क्रीनशॉट में दिखाया है उसके बारे में 2 या 3 लाइन आप उसके बारे में लिख सकते हो. सो इन दैट वे यू नीड टू प्रिपेयर इन द लैब मैनुअल. लैब मैनुअल का जो फॉर्मेट है वो मैं आपके साथ आज ही शेयर कर दूंगी, सो यू कैन directly implement, directly just prepare in that format only, right? So in this way you can do. You can see here there are many screenshots. Ma'am, Yes. ma'am, where do we have to submit the lab manual? A lab manual you need to submit in the Google Classroom, but I have not yet created the Google Classroom of your class, but I'll just create a Google Classroom. But if your college is starting in the offline mode, then you don't need to submit it over there, then you need to give the hard copies. Okay, ma'am. Okay, so if you want to use the different variants of ARP, then also you can just write ARP, click on the enter, and you can see the different variants of the ARP that you can use, right? ARP के 2-3 variants use करना है आपको और NetState के भी 2-3 variants use करके उसके screenshots वहां पे paste करने हैं, right? So don't forget to do that. यहाँ पे हमने 2-3 variants ही use किए हैं, but you can try more variants of ARP and NetState command, right? It's very easy. Okay, so any doubt up till now? No, ma'am. Okay, and one more thing that I want to ask you, that have you all started the CCNA course in which I have enrolled all of you? No, ma'am. Can you please repeat once more the instructions? Okay. So first of all, you need to log in to this website, that is www.netacad.com. You can see here www.netacad.com. राइट, यहाँ पे आपको लॉग इन करना है. योर आईडी हैज ऑलरेडी क्रिएटेड, आपके आईडीज में ऑलरेडी बने हुए ही है सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी में, राइट? सो यू हैव टू लॉग इन विथ योर इंस्टीट्यूट मेल आईडी. अगर आप अपने पर्सनल आईडी से लॉग इन होते हो, you will not access that course because I have enrolled all of you with your institute mail ID only. So if you are logged in from with your personal mail ID, you cannot access the course, right? So when you log into that, you can see here the 2 courses in which I have enrolled all
right? This is module 1, right? That is about introduction to the network, right? Where you can see all the basic details about the networking. You will learn all the basic things about the networking. So when you click on the launch course, as this is the dashboard of this course, when you click on the launch button, you can see here CCNA R and S, that is introduction to the network here, right? Where there are different chapters that you need to learn, and chapter wise there will be a quiz exam and a chapter 1 exam. You need to give both this exam after the completion of one chapter, right? So this course have in total 11 chapter is there, and after the completion of 11 chapter there is one final exam, right? As you can see here, यहाँ पे अभी वो एक्टिवेट नहीं की है, बट एज एंड व्हेन यू कंप्लीट दी होल 11 चैप्टर, दिस एग्जाम विल बी एक्टिव जस्ट फॉर ओनली वन डे, राइट? वो कौन से डे पर एक्टिव होगी, दैट आई विल जस्ट अनाउंस इन योर क्लास, एंड दिस एग्जाम विल नॉट बी रीएक्टिवेटेड. किसी के लिए ये रीएक्टिवेट नहीं होगा. इफ यू आर सेइंग दैट मैडम आई फॉरगॉट टू गिव द एग्जाम, then you will lose your marks, your certificate will not be generated, right? So as and when you complete the course, one certificate will be generated, right? If you have reached up to the mark, right? अगर आप squeeze में final exams में जो score है वो up to the mark gain करते हो, then you will able to generate the certificate, right? मॉड्यूल 1 का सर्टिफिकेट आप जनरेट कर पाओगे, और वो सर्टिफिकेट आपको एज अ पार्ट ऑफ योर सबमिशन यू नीड टू सबमिट दैट सर्टिफिकेट ऑफ मॉड्यूल 1 विच कंटेन्स 20 मार्क्स, राइट? जिसके 20 मार्क्स है. यह सारा पूरा जो कोर्स आप कंप्लीट करते हो along with the quiz exam and the final exam, one certificate will be generated and you have to submit that certificate that contains 20 marks. Another course, that is a module 2, that you can see here, which is about routing and the switching essentials, right? So when you just click on the launch course, you can see here there are another different chapters which is related to the routing concepts, switching concept, or you can say the networking core devices. So in the same way you have to do for the module 2 also, right? Module 2 में भी काफी chapters है. There are in total 10 chapters in the module 2, और उसमें भी सही उसी तरीके से है. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर यू नीड टू गिव द क्विज एग्जाम एंड यू नीड टू गिव द chapter wise exam which is given over here, right? And after the completion of all these 10 chapters you need to give the final exam of the module 2, and that will be activated for just one day, and in that on that day you need to give the final exam as well, right? उसके बाद ही आपका certificate 2 generate होगा for module 2. So there is a 2 certified courses, CCNA 1 that is about introduction to the network, and the CCNA 2 which is about the routing and the switching essentials, right? So ये दोनों कोर्स है वो आपको अपनी एंड से कंप्लीट करने हैं. मॉड्यूल 1 नीड्स टू बी कंप्लीटेड बिफोर मिड सेमेस्टर 1. मिड सेमेस्टर 1 के पहले आपको मॉड्यूल 1 पूरा करना है, और मिड सेमेस्टर 1 के बाद आपको मॉड्यूल 2 स्टार्ट कर देना है, राइट? सो इट्स ऑल अप टू यू. आप जितना जल्दी कोर्स स्टार्ट करोगे उतना जल्दी खत्म होगा और आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो पाएगा. If you are facing any difficulty in login the Cisco account, then you can contact me, right? आप मुझे मेल कर दो या फिर आप मुझे लैब में या फिर लेक्चर में बता दो that I am facing an issue in logging in my Cisco Netkid account.
ओके, सो आज ही एक बार लॉग इन करके देख लेना कि आपका लॉग इन सही से हो रहा है और आपको ये 2 कोर्स दिखने चाहिए अपने डैशबोर्ड पे. If you are unable to find this course in your dashboard, let me know at an early stage so that I can do something for you. Okay, so you need to submit 3 things as a part of your submission: module 1 certificate, module 2 certificate, and the lab manual. Right, lab manual के 10 marks है, module 1 certificate के 20 marks है, and module 2 certificate के 15 marks है. Right? Excuse me, ma'am. Yes, Mohammed. Ma'am, do you have any idea when mid one might probably start? Mid 1 probably will start in the second week of March or third week of March. Okay, ma'am. Thank you. मैम ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन? ऑफलाइन, शायद तो ऑफलाइन ही होंगे, बट yet there is no circular, so I cannot say anything. बट अभी तो यही मान के चलो कि ऑफलाइन एग्जाम है, so you need to prepare everything in detail. सो मिड सेमेस्टर के पहले ये कोर्स कंप्लीट करना है, सो यू डोंट हैव मैनी डेज, आपके पास बहुत ही कम, 1 महीना ही है ये मॉड्यूल 1 को पूरा करने में. 1 महीने में ये मॉड्यूल पूरा हो जाएगा, सो डोंट वरी. बेसिक चीजें ही है सारी, और जो हम लोग थियरी सेशन में पढ़ रहे हैं उससे काफी रिलेट करती है. राइट, सो कंप्लीट द मॉड्यूल 1 बिफोर मिड सेमेस्टर. ओके, और कोई डाउट है? यू कैन आस्क मी राइट नाउ. Okay, so it's time for attendance. Let me share my screen. Okay, AI students 1, प्रेजेंट मैम. 2, Present, ma'am. 4, 5, 6, 7, 57, 58, Present, ma'am. 68, 69, Present, ma'am. 71 is present, 1 is present, 2, Present, ma'am. 3, 4, Present, ma'am. 5, Kunal present, 6. Okay, so the students are absent in AI. Just wait. Now for big data. Okay, big data 1, 2, Yes, ma'am. 3, 4, Present, ma'am. 5, Present, ma'am. 7, 8, 9, 10, Present, ma'am. 11, 12, 13,
Yes, ma'am. Okay. Check these numbers if I have mistakenly marked you as absent. Excuse me, ma'am. Yes? Ma'am, regarding the exam, ma'am, I have to discuss something with you.